Marseille nil, Liverpool 3. Another spectacular show after quite some time. ये कहना पड़ेगा मेरे को आज. परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी मेरे हिसाब से. अगर आप हाइंडसाइट में देखो, कुछ घंटे बाद सोचो गेम के बारे में या गेम को फिर से देखो, आपको पता लगेगा कि परफॉर्मेंस काफ़ी कन्विंसिंगली हम जीते हैं. पहली बात तो could have been 5-0, could have been 6-1. एक गोल उनको भी दे देते हैं भाई, क्योंकि 2-3 ट्रांजेक्शन में वो भी उन्होंने हमें खोला था. वो तो एलिसन का वर्ल्ड क्लास ब्रिलियंस था ही कि शॉट स्टॉपिंग में वो माहिर है, रीडिंग द गेम प्रीटी ब्रिलियंटली. बट अगर बात करें गेम की यार, इन टोटलिटी आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट वी वर वेरी पॉजिटिव थिंकर्स इन दिस गेम. आई थिंक वी वर वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग इन दिस गेम. अब 4-2-2-2 में किसी तरह से सेटअप थे हम, राइट. फ्रंट टू थे मोहम्मद सलाह एंड एकीटीके, उसके पीछे थे वर्ड्स एंड सोबोस्लाई, उसके पीछे थे मैकालिस्टर और ग्रेवेनबर्ग. एंड दे वर वेरी फ्लूइडिक, दे वर वेरी मोबाइल. काफ़ी शिफ्ट हो रहे थे. इट वाज शिफ्टिंग इनटू अ 3-4-3 इन अ वे एट टाइम्स, और अ 3-5-2 इन अ वे, जहाँ पे बेसिकली लिवरपूल वर कंजेस्टिंग द मिडफील्ड सो दैट हॉयबर्ग और उनके जो पार्टनर थे डबल पिवट में वो इतनी दिक्कत ना दें. So basically, I think passing lanes, we were trying to secure them, we were trying to block them. काफ़ी physical game लगी मेरे को. In fact, physical in terms of always behind Marseille's men, always behind them. So we were pressing onto them pretty well, I thought. उनको breathing room नहीं मिल रही थी. मतलब इतनी भी ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही केजी सिचुएशन बना दिया था, बट ऐसा था कि we were marking them well enough. ठीक है. I just feel that the caliber of their midfield at times is lacking in such big fixtures. तभी वो अपनी गेम निखार के निकाल नहीं पाए. डिजार्बी बॉल बेसिकली देखने को मिली नहीं. इनफैक्ट आई ओनली फेल्ट कि मासे वर डेंजरस इन एरियाज व्हेन ग्रीनवुड वाज फॉलिंग बैक, और ही वाज स्विचिंग द प्ले वेरी वेल, और ही वाज रनिंग विद द बॉल, कैरिंग द बॉल रियली वेल. देयर वर इंडिविजुअल एफर्ट्स फ्रॉम वन प्लेयर. बारिंग दैट आई सॉ कि दूसरा स्ट्राइकर जा दो, अमीन गोरदी, उसने एक शॉट लिया था, एलिसन ने उसका सेव किया था. But I don't think there was anything major happening at Marseille, to be honest. And हमने एक्सपेक्ट तो किया था कि डिजार्बी बॉल देखने को मिलेगी भाई. इट कैन बी विशियस, लिवरपूल माइट लूज, लिवरपूल माइट विन. बट एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए भी हमने जीत जो हासिल की है, इट इज़ मैसिव, राइट. And we have to give credit to Arne Slot for the way he set us up. I think Arne Slot did his job quite well. In fact, we were so attacking. We had so many chances. Of course, the game had a slow start to it. पहले 20-25 मिनट लगा कि हाँ चलो कुछ हो नहीं रहा है. Then we opened the scoring gates with the free kick. Then Frimpong. Then Gakpo happened. But बीच में मेरे को लगा था कि Florian Wirtz and Szoboszlai in the first half were quite sloppy. They were giving the ball away massively. काफ़ी थ्रू बॉल्स थी, काफ़ी की पासेस थी, काफ़ी फाइनल थर्ड एंट्रीज थी जो हमें देखने को मिली नहीं. बिकॉज इवन सलाह, वी हैव टू कॉल देम आउट, दे वर सप्लाइंग द बॉल इन द राइट स्पेसेस, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज हिटिंग ट्रैफिक. वो चांस तो हमें देखने को मिला ही नहीं. तो बेसिकली आर्ने स्लॉट ने हमें सेटअप किया था प्रॉपरली टू स्कोर अ लॉट मेनी गोल्स. और फुल बैक्स वर वेरी गुड, मॉन्स्ट्रस. मैं तो ये कहूँगा कर्केज एंड फ्रिम्पोंग का जो जॉब था बेसिकली टू बॉम्ब फॉरवर्ड एंड टू एंश्योर दैट दे आर मार्किंग देयर मेन क्वाइट वेल ऑन द फ्लैंक्स. Kirkes did a very difficult job against Greenwood. Mason Greenwood को भाई mark करना is not easy, right? You need to be backpedaling at the right time. You need to be fully locked in at the right time, and I think he did a brilliant job at that. Frimpong supportive index with Mohamed Salah. I think Mohamed Salah was very central. Frimpong was covering the entire right flank. It worked. It worked. Once again, he scored the goal. Once again, created a very big chance to Mohamed Salah ne. Basically, he couldn't finish it. Not the right execution from Mohamed Salah at the right time, of course. But again, I'm not going to be harsh on him. Entered the team after AFCON. I think he brilliantly fit the role. And I'm hoping he is playing him more in a very central role, because this is what I want to see. We have enough legs. Even Kirkes has shown it to us in the first half, second half. हमारे पास फायर पावर है बेसिकली, राइट. हमारे पास स्पीड है, रिकवरी पेस है. वी हैव टू यूज देम टू द बेस्ट, राइट. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन इन एवरी फिक्चर नाउ कि एक तरह से डबल स्ट्राइकर रोल खेलें, राइट. इट हैज़ टू बी, वी हैव टू प्ले विद विंगर्स एज वेल, बिकॉज सीन ये है कि फ्रिम्पोंग और कर्केज हर गेम में इतना लेवल की फिटनेस नहीं दे पाएंगे अभी, ये मेरे को लगता है. दूसरी बात यार, we need to be humble, right? We cannot be flying on cloud nine because we know what we've been going through this season. तो मद्देनजर देते हुए कि हम चौथे पोजीशन पे हैं चैंपियंस लीग में, that is a massive feat. Fourth in the Champions League, right? Massive. I think given that we've been at our worst, right? There has been so much uncertainty around the manager कि क्या होगा क्या नहीं होगा. Tactically, are we going to improve or not? We are fourth in both the leagues.
we got to be grounded. I think we need to work on this. Just keep this momentum going. We need to get more wins. Bournemouth is next. But again, I'm very proud of the manager. I think जो उसने आज हमें set up करके दिया है, he basically knew this is the right formula to win the game. The players stepped up. In fact, I think what really won us the game was कि हमने उनको we let them get on the ball. ऐसा नहीं है, we didn't let them. We let them get on the ball. We culminated on the mistakes that they made. The way they lost the ball, we blocked the passing lanes really well. I think हमने उन situations में transitions में उनको बहुत तंग किया. ठीक है. So counter press was very good at times, especially from Van Dijk, Gravenberch, McAllister also. McAllister ने second half में line breaking passes कितनी दी, कितनी attempt किए हैं, वो तो आपको statistically दिख ही जाएगा. You got to give it to them, man. I think these tactics will work. We cannot be thinking about maybe pressing with this team in a way, pressing as in keep going all in, because we know that teams, oppositions are also tactically finding gegen press and high presses out, right? अभी पोजिशनली अगर देखा जाए तो ये गेम में भी इतनी रोटेशन नहीं हुई थी मेरे हिसाब से. मार्से की तरफ से इतनी रोटेशन नहीं हुई है. ग्रीनवुड वाज रोटेटिंग अ लॉट, but the way I was expecting Marseille to actually rotate and cause our press a lot of problems, वो नहीं हुआ. I thought Kondogbia and Højbjerg were handleable. But वैसा नहीं है कि they were poor, but they were average. They were not that good. And I think midfield is the letdown, massive letdown to them. Plus their attack also, I don't think they were able to mulch a lot of sequences. बना नहीं पा रहे थे attacks, right? वहाँ से गोल नहीं आए. Overall, for me, player of the game has to be Frimpong, right? It has to be Alisson for me, right? ये दोनों बहुत अच्छा खेले हैं, I think. And बाकी खिलाड़ी भी अच्छा खेले हैं, but these were the standout players for me. What do you think? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नहीं हैं यार.